What was the transforming principle? What was the transforming principle then? DNA. DNA, right? From whose experiment we came to know about it? Avery McLeod McCarthy. Very good. Avery, McLeod and McCarthy. So students, like we'll just go into the past. You know, till 20th century, it was believed that proteins are the transforming principles. Means proteins are the genetic material which helps to transfer the hereditary characters from parents to offspring. So it was believed that proteins were the transforming particles or the activators or the transforming principles. But then, in the 19th century, somewhere around 1944, the trio of the scientists, that is Avery, McLeod and McCarthy, these three scientists proved that who are the transforming principles? DNA. DNA. But then still, some scientists were not convinced with this. So, when these three scientists were performing the experiments to find out the exact nature of the genetic material, which they succeeded also, they found DNA is the genetic material. There were two more scientists. Around the year 1952, these two scientists also found that yes, DNA is only the transforming principle. DNA is only the true genetic material. So those two scientists were Hershey and Chase. So students, in today's lecture, we're going to study Hershey and Chase experiment where they also found that who are the transforming principles? DNA. So should we start studying Hershey and Chase experiment? Yes. But students, before I'll start with today's topic, Sunday को, अच्छा, tomorrow I won't be able to take any lecture because I'm going out. तो कल मैं लेक्चर नहीं लूंगी. तो आज के लेक्चर में जितना भी पढ़ा के होगा, लाइक आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स लेने वाले हैं. सबसे पहला Hershey and Chase experiment. Second, we're going to study the properties of the genetic material. And third, we'll just talk about RNA world. What is RNA? Okay. तो hopefully आज इतना हमारा complete हो जाएगा. तो coming Sunday, there will be a test on this chapter. 11th and 12th, both are you. Am I audible clearly? Yes, ma'am. So Sunday को somewhere around 10 or 11 o'clock, I'll keep the test. अब तक जितना भी पढ़ाया है उसके ऊपर एक 52 to 55 questions का test होगा. Now listen to me carefully. Suppose if I keep the test 11 a.m. to 12 noon, okay? जितने क्वेश्चंस होंगे उतने ही मिनट का टेस्ट होगा. अगर 55 क्वेश्चंस है तो इट विल बी 11:55 a.m. Are you understanding? Yes, ma'am. Yes. तो sharp at, अगर ये तुम्हारा टेस्ट टाइमिंग है, sharp at 11:50 a.m. मतलब तुम्हारा टेस्ट खत्म होने के 5 मिनट पहले. Sharp at 11:50 a.m. मैं यही जूम का लिंक जो मेरा है वो भेजूंगी. सबने ज्वाइन करना है. 5 मिनट के बाद जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, हम लाइव आंसर के डिस्कस करेंगे. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो immediately students, you all will come to know कि तुम्हें उस टेस्ट में कितने मार्क्स आए. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is for both 11th as well as 12th standard students. Ab 12th standard students, am I audible to you? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, miss. ये अब जो आगे का मैं बता रहा हूँ, 12th standard student, मैंने पिछले संडे तुम लोगों को बताया था कि कमिंग संडे there will be your test on animal kingdom, right? Yes, miss. Yes, miss. तो तुम्हारा इस पे भी टेस्ट होगा इवनिंग में. Are you understanding? Yes, miss. Yes. Yes, miss. तो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट तुम्हारे 2 टेस्ट है. मॉर्निंग में तुम्हें ये टेस्ट देना है. अब तक जो भी
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में अब तक हमने जो भी पढ़ा उसके ऊपर टेस्ट मॉर्निंग में होगा तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड, एंड आफ्टरनून और इवनिंग 2 बजे रखोगे दोपहर को? Yes, miss. Okay, miss. Yes, miss. Okay, so at 2 p.m. there will be only 12th standard students test on animal kingdom. So again, अब कितने क्वेश्चंस होते हैं देखूंगी, उस हिसाब से टेस्ट का टाइम होगा. एंड यू नो नाउ टेस्ट खत्म होने के 5 मिनट पहले वापस हम लाइव मिलेंगे एंड आंसर की डिस्कस करके इमीडिएटली पेपर चेक करेंगे. गॉट इट? Yes. Yes, ma'am. So 11th and 12th, both of you cleared with the exam schedule on Sunday? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. And one important thing which I want from every one of you, best marks only. क्योंकि एक तो सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलता है मुझे, फिर भी मैं छुट्टी नहीं ले रही हूँ, तुम्हारे लिए पेपर्स भेजूंगी, लाइव लेक्चर रख के आंसर की डिस्कस करूंगी. This is because I want result from you all. So if I am not taking a single holiday just because for your result should be better, so तुम्हारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ. Got it? Yes, ma'am. Okay, चलो without wasting much time, let us study. अच्छा, और आज के टॉपिक जो हमारा एंड होगा, मैं पूरा स्टार्टिंग से पीडीएफ भेजूंगी. ओके, तो तुमने अब तक बनाए हुए नोट्स प्लस मैंने भेजा पीडीएफ, दोनों अच्छे से रीड करो. कुछ मिसिंग आउट है तो वो नोट्स में कंप्लीट कर दो. ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So Harshi says experiment to find DNA as genetic material. ऑलरेडी किन्होंने ये डिस्कवर किया था? ऑलरेडी एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने ये डिस्कवर किया था. फिर भी जब वो अपना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ये दोनों भी लगे हुए थे ये ढूंढने में कि एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो प्रोटीन है कि वो न्यूक्लिक एसिड है. ओके, इज डीएनए अ न्यूक्लिक एसिड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So students in their experiment they selected 2 components. The first component they selected a bacteria E. coli. Which bacteria they selected? E. coli. coli. सबको पता है, Escherichia coli, right? Yes, ma'am. Yes. The second component they selected T2 bacteriophage. Now can you tell me what is a bacteriophage? Yes. Virus that infects attacking bacteria. Yes, affected Correct. It is a virus that infects bacteria. So let us study about this T2 bacteriophage structure. Students, you know the virus has a protein coat, right? Yes, ma'am. So this is the protein coat of the virus and this is the DNA of this virus. So ये जो पिक्चर है ये इस बैक्टीरियोफेज का है and suppose ये है E. coli बैक्टीरिया and इसका जेनेटिक मटेरियल. So this is E. coli bacteria and this is the bacteriophage which infects E. coli. Okay. Now students, एक और point बताना चाहती हूँ. There are some viruses. They have RNA as their genetic material. I repeat. Some viruses has RNA as a genetic material. ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA. Correct. But there are some viruses which has RNA as genetic material. Such viruses are called retrovirus. Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And such viruses are more dangerous. Such viruses are more dangerous. ऐसे क्यों? आज हम इस चैप्टर में टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं. स्टूडेंट्स, आरएनए एंड डीएनए दोनों भी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन फिर भी डीएनए इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल because DNA is the one who produces
Come on, DNA produces RNA. Protein. RNA. 10th standard student तो हमने पढ़ा है ना सेंट्रल डॉग्मा. One of the strand of DNA produces mRNA, right? Yes. Yes, Okay. अब स्टूडेंट्स RNA is genetically more active. क्यों? देखो RNA के पास डायरेक्ट कोड्स होते हैं for amino acids to produce proteins, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डायरेक्ट अपने कोड यूज करके प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है क्या? No. No. DNA is dependent on RNA to produce proteins, right? Yes. Ma'am. Yes. सबको समझ में आ रहा है? हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा है. सेंट्रल डॉग्मा में क्या? DNA produces mRNA. Then that mRNA comes out of the nucleus into the cytoplasm, gives the information to tRNA. tRNA produces amino acids which are bound with the help of rRNA to produce Protein. प्रोटीन्स. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है, बट डीएनए डायरेक्टली अपना न्यूक्लियस छोड़ के साइटोप्लाज्म में आके वो सब प्रोसेस नहीं कर सकता. So DNA is dependent on RNA to produce proteins. So we say that DNA, the genetic material, is less active, but RNA is more active. One more thing, RNA has rapid mutability. What do you mean by mutation? Sudden change. Sudden change. Sudden change in the genes, right? जिसकी वजह से कैरेक्टर चेंज हो जाता है. तो वही तो हो रहा है ना कोविड-19 वायरस में. कोविड-19 वायरस इज अ टाइप ऑफ Retrovirus. रेट्रोवायरस है, मतलब उसके अंदर डीएनए की जगह पे RNA. आरएनए है. एंड मैंने अभी बताया आरएनए इज मोर एक्टिव देन द डीएनए, मोर म्यूटेबिलिटी. डीएनए स्टेबल होता है लेकिन आरएनए बहुत एक्टिव होता है. आरएनए में म्यूटेशंस भी फटाफट होते हैं. इसलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये कोविड-19 के नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं म्यूटेशंस की वजह से. तो कौन सी दवाई यूज करें वही समझ में नहीं आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस? Yes, ma'am. One more virus is there, AIDS का virus. What is that? HIV. 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 तो क्यों उसमें भी अब तक एग्जैक्ट कोई मेडिसिन नहीं निकल पाया है जो एड्स को प्रिवेंट कर सकता है? Because HIV also is a type of which virus? Retrovirus. तो रेट्रोवायरस का प्रॉब्लम क्या है? उनके अंदर inside them the genetic material is not stable like DNA. They have a genetic material active, that is RNA. RNA, and that is why they again and again mutations. देखो उसने अपना जीन कोड ही चेंज कर दिया. तो हम दवाई किसी एक पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को ध्यान में रख के बनाते हैं. उसने अपना जीन कोड ही चेंज कर दिया, म्यूटेशन कर दिया, तो वो दवाई फिर उतना ज्यादा इफेक्टिव होगी क्या उस पे? No. No. So now you understood why the viral diseases, especially the retroviral diseases, are such a big headache for us. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. So, any doubts still here? No, ma'am. Take the screenshot. Done, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, students, how does the virus works? ये कौन है? E. coli. Very good. ये कौन है? Bacteriophage. T2 bacteriophage, right? तो ये है T2 bacteriophage and ये है E. coli. Now, how does this bacteriophage works? As soon as the bacteriophage attaches to the bacteria, it dissolves its coat and its genetic material enters inside the bacterial cell. Now, this bacterial cell feels that it is its own genetic material and it allows this
virus to replicate. You know na replication? Yes, ma'am. Ma'am. तो ये इसका डीएनए ही यूज करता है. ये जो है ये इसका सेल का मशीनरी यूज करके are the many copies Clones. of the T2 bacteriophage are formed. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then what do these all do? They rupture the membrane, kills the bacteria, and again are released out. Again ready to enter into many more E. coli. Are you understanding? Yes, ma'am. So in this way, the bacteriophage enters inside the bacterial cell. The bacterial cell feels that the genetic material which has entered is its own material and it allows it to replicate, and then in this way the bacteria gets killed. Understood? Yes, ma'am. But Hershey and Chase, when they performed this experiment around the year 1952, so they performed the experiment with this bacteriophage and bacteria to find out exactly वायरस में से बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ. ये प्रोटीन कोट ट्रांसफॉर्म हुआ कि ये डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ. They didn't know, right? तब किसी को ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली वायरस की बॉडी में से बैक्टीरिया की सेल में क्या जा रहा है. प्रोटीन जा रहा है एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कि डीएनए जा रहा है. So they wanted to find this. For that, they cultured this T2 bacteriophage in two different ways. Cultured means? Seen under microscope. No. Cultured बोल रही हूँ मैं. Observe. Ma'am, in Produced in plate laboratory. where they can Sterile. Yeah, in the culture plates, they allowed these bacteria to, this virus to grow, right? Yes, ma'am. Yes. Yes. But by doing some slight artificial changes, क्या किया? See, just take the screenshot. Ma'am, clear नहीं है. Yes, ma'am. Clear नहीं? मुझे तो clear दिख रहा है. Is it clear or not? No, ma'am. Blur. It's blurred, ma'am. Everyone, it's in blur. Now Yes, it's ma'am. yes, ma'am. मैम कैमरा ऑफ करके ऑन करो फिर से. Is it now? Yes, ma'am. Is it blur now? No, miss. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am, clear. ले लिया screenshot? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see what did they do. Students, now do you see that मैंने बैक्टीरियोफेज अब तक जब भी निकाला था सिर्फ ब्लैक पेन यूज किया था ड्रॉ करते वक्त, राइट? Yes, ma'am. अब ये दोनों बैक्टीरियोफेज सेम है कि डिफरेंट है? Different. Now what's the difference I'm writing here? Can you tell me what is this outer coating? Is it a protein coat? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But here this protein coat is radioactively labeled. रेडियोएक्टिवली लेबल्ड मतलब उन्होंने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज किया जो इस प्रोटीन कोट में इंसर्ट किया. अब ये अलग हो गया, आर्टिफिशियली हमने थोड़ा चेंज किया इसके प्रोटीन कवरिंग में, राइट? Yes. Yes. To radioactively label the protein coat, 12th standard, can you tell me which radioactive element they used?
Phosphorus. Sulfur. Very good. Which phosphorus? Miss Huh? protein coat with sulfur. Miss. Sulfur ki phosphorus. Miss sulfur. Protein Correct. coat. Which sulfur? 35. Very good. Radioactively labeled sulfur S35 यूज किया उन्होंने. S35 radioactive isotope of sulfur. So it is radioactively labeled sulfur protein coat. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But this is just a DNA. DNA को radioactively label नहीं किया यहाँ पे. Are you understanding? Yes. Yes, ma'am. यहाँ पे उल्टा है देखो. यहाँ पे किसको radioactively label किया? DNA. DNA. Yes. तो यहाँ पे ये है radioactively labeled phospho-DNA. Phospho means यहाँ पे यूज किया P32 isotope of phosphorus which is radioactive. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रोटीन कोड को रेडियोएक्टिवली लेबल करने के लिए सल्फर ही क्यों यूज किया, क्यों नहीं यहाँ पे फॉस्फोरस यूज किया? बिकॉज स्टूडेंट्स अभी 11th वालों को नहीं समझेगा, जब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे ना तब और डिटेल में समझे. एक शॉर्ट में बता देती हूँ. 12th कैन यू टेल? Miss disulfide bond formation can take place. Sulfur. Some amino Correct. acids contain sulfur. Very good. As some proteins contains sulfur in them, तो easy गया वो सल्फर से लेबल करने के लिए. Proteins does not contain phosphorus in them. Okay, proteins में phosphorus नहीं होता. That is why you cannot label it with phosphorus. But अब 11 plus 12 दोनों को पता है, हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, right? DNA, RNA दोनों. DNA में phosphorus होता है कि नहीं? Phosphoric acid. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So is it easy to label it with phosphorus then? Yes. Yes, ma'am. समझ में आया कि जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए को कोड करने के लिए, सो इट इज अ सिंपल प्रोटीन कोड. अब रेडियोएक्टिवली लेबल क्यों किया? यहाँ पे प्रोटीन कोड को रेडियोएक्टिवली लेबल किया एंड यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को किया. व्हाई? स्टूडेंट्स, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन सच अ वे दैट इट ओनली इंसर्ट्स its genetic material inside the bacterial cell, not the protein coat. Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then in the next step will it look in this way? Protein coat is outside only. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What we'll see here? Is it empty protein coat outside now? Yes, ma'am. Yes. Okay. तो अब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ने अपने एक्शन शो कर दी. Now then, after few hours, these two scientists, Hershey and Chase, they blended this bacterial culture. Blend किया मतलब मिक्सर में थोड़ा blend किया इसको, you know, blending करते हैं मिक्सर में. तो Yes. उसकी वजह से क्या हुआ? Because of that, what happened? These bacteriophage protein coats were separated from the bacterial cell. Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So you're right. Blending. So after blending, the bacterial protein coats, the viral protein coats were separated. Same here will show. Any doubt still here? No, ma'am. No, ma'am.
Now the next step they followed, ये जो bacterial culture उनको मिला, they centrifuged it. After centrifugation, the DNA was separated and the cytoplasm was separated. Understood? Yes, ma'am. So here they did not find, what they did not find? Did they find this coating here in the bacteria? No. No, ma'am. No. So they didn't know radioactively labeled. Protein coat in the centrifuge. तो centrifugation में उन्हें radioactively labeled protein coat नहीं मिला. So क्या prove हुआ? Is it getting transformed into the bacterial cell? Yes, ma'am. अरे प्रोटीन कोट मिला ही नहीं बैक्टीरिया के अंदर No, सेंट्रिफिकेशन no, के ma'am. बाद. तो प्रोटीन कोट मतलब प्रोटीन्स ट्रांसफॉर्म होते हैं क्या इनटू द बैक्टीरियल सेल? No. No, ma'am. No, ma'am. But here what they found? They found protein. प्रोटीन ठीक से देखो what they No, found. radioactive. Correct. Radioactively labeled. Here after centrifugation they found radioactively labeled DNA. मतलब बैक्टीरिया में क्या आया from the virus? DNA. DNA. So again, is it proved that DNA is the transforming particle? It is a transforming principle. It is the genetic material, not the protein. Understood? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So any doubt in the experiment? No, ma'am. No, ma'am. Take the screenshot. Yes, ma'am. Did everyone understand this experiment which I explained just now? Yes, ma'am. Yes. 12th standard. तुम्हारा तो ये second time हो रहा होगा ना सर? Already you must have studied it in botany. Yes, miss. Okay, so because of such experiments, finally it was concluded that DNA is the genetic material, not the protein. Now, along with DNA, RNA भी होता है as a nucleic acid, as a genetic material. But who is the true genetic material? To find out that, different scientists, after the experiments, they gave some properties of the genetic material. So what are those properties? This topic can also be studied as DNA versus RNA. क्योंकि जब properties discuss किए गए ये genetic material के, then it was found that DNA is the true genetic material because DNA possesses all those properties, not the RNA. RNA possesses few properties, not the all. Okay. Yes, ma'am. So the first property, what a genetic material should have? Replication. Students, tell me, can RNA replicate on its own? No. 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 देखो, DNA we know that it is a double-stranded, double helical structure. Now, one of the strand of the DNA, suppose this strand produces its replica, right? Which we call as RNA. mRNA. which RNA? Do we call it as messenger RNA? DNA का एक strand जब अपना replica, अपना xerox copy, you can say in simple words, produce करता है. But thing is that students, अगर DNA strands पे codes A and G है, तो उसका जो replica produce होता है, उस पे same codes होते हैं कि complementary? Complementary codons. Complementary.
कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके अपोजिट, जैसे ए के साथ कौन होता है, टी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज आरएनए, Uracil. Uracil. यूरासिल होगा, करेक्ट। इस पे जी है तो इधर क्या होगा, Cytosine. C. Cytosine. cytosine. Are you understanding? So this ability of replication to produce its number of copies is possessed by DNA. not the RNA, क्योंकि RNA खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, RNA is produced by DNA. So the first property which a genetic, obviously students ये property होनी ही चाहिए, तभी तो new cells will be produced ना. We have studied mitosis and meiosis. This is the parent cell having DNA. The DNA gets duplicated, then the cell divides into two new cells. Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the first property, replication, should be there in a genetic material. Second property, as I've already told you in today's lecture in the beginning, the genetic material should have stability. Should it be very active or should it be stable? Stable. Stable. तो मैंने आज ही बताया, who is more stable in DNA and RNA? DNA. DNA. Because I told you RNA, RNA has catalytic properties. RNA has a catalytic properties, means it takes part in the chemical reactions because it can produce proteins directly. Students, this is the RNA strand having genetic codes in the form of triplet codons like ATT, CGA, AGT. तो ये कोडॉन्स के थ्रू ये डायरेक्टली अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर सकता है. अमीनो एसिड प्रोड्यूस हुए मतलब प्रोटीन्स भी तैयार हो जाएंगे बाय बाइंडिंग द अमीनो एसिड्स, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट डीएनए जो है वो डायरेक्टली अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके ऐसे प्रोटीन्स अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है क्या? No. No, ma'am. नो. डीएनए पहले अपना कॉपी दैट इज आरएनए प्रोड्यूस करता है, फिर आरएनए प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है. तो कौन स्टेबल है और कौन एक्टिव है? DNA is stable. DNA is RNA is stable. RNA is active. एक्टिव. समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी भी अगेन डीएनए में है. सो इज इट अ ट्रू जेनेटिक मटेरियल rather than considering RNA as a genetic material? Yes, ma'am. Next property the genetic material should have is mutability. That means it should perform mutation but in a slow pace, not rapid mutations. Again I'll tell you, कौन rapidly mutation करता है? RNA. RNA. DNA and RNA दोनों भी mutations करते हैं, but DNA being stable in nature, it doesn't undergo much mutations. Slight mutations it undergo. Why mutations are necessary? First of all, mutation should be there for evolution, right? वरना वही same organisms आते जाएंगे, right? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So mutability is possessed by both DNA as well as RNA. But being stable in nature, the mutations done by DNA are also stable. RNA बहुत एक्टिव है तो इसके mutations can prove harmful, right? जैसे मैंने अभी बताया रेट्रोवायरस का एग्जांपल COVID-19 and HIV. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो बहुत रैपिडली म्यूटेशंस करते हैं, बार-बार म्यूटेशंस करते हैं, so it becomes difficult to deal with them, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts still here? No, ma'am. No, ma'am. Fourth character what it has, it should have expressivity. Means the genetic material should be able to express the characters. Obviously DNA करता है ना, DNA RNA प्रोड्यूस करता है, फिर RNA प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिकॉज जेनेटिक मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है ना, टू एक्सप्रेस द बॉडी कैरेक्टर्स, राइट? Yes. Yes, ma'am. सिंपल एग्जांपल, कोई टॉल होता है तो कोई शॉर्ट होता है, कोई फेयर होता है कोई डार्क होता है, किसके हेयर स्ट्रेट होते हैं किसी के कर्ली होते हैं.
आर दीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स. जिसकी बॉडी में जिस टाइप का डीएनए है उस टाइप का कैरेक्टर ही वो एक्सप्रेस करेगा, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So these are the 4 characters or the properties of the genetic material, and all these 4 properties are absolutely followed by DNA. Even RNA also follows, but in a random way. But DNA follows it truly. So DNA is a true genetic material. अब students मुझे बताओ, यहाँ पे proteins, does proteins have expressibility? क्योंकि proteins ही है जो body character express करते हैं. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. But you tell me, does proteins have the ability of mutability? Protein अपने आप mutation कर सकता है once it is formed? No. 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 हाँ चलो, प्रोटीन स्टेबल है, ये कैरेक्टर वो फॉलो करता है, बट कैन प्रोटीन्स रेप्लिकेट ऑन देयर No, ओन? ma'am. No. So proteins does not possess the property that is replication and mutability. So can you call them as genetic material? No. No, ma'am. No. तो फाइनली अब साइंटिस्ट का दिमाग ठंडा हो गया कि हाँ बाबा, प्रोटीन्स नहीं, डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So any doubt in the properties of the genetic material?